अस्सलाम वालेकुम जी, वजीह हसन अलवी से एंड यू वाचिंग एनी लास्ट ईयर्स ला एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड हमने अपनी लेक्चर से स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम डिफरेंट लेक्चर्स जो है वो डिस्कस करते हैं। और अब तक हमने पास्ट पेपर्स को डिस्कस कर लिया हुआ है 2016 से 2022 तक। उसके बाद हमने एक इस्लामिया से रिलेटेड लेक्चर से स्टार्ट की थी, जिस पर 10 लेक्चर मौजूद हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो आपने 10 के 10 लेक्चर्स लाजमी जाकर सुनने हैं अगर आप लैट का पार्ट जो है वो अटैम्प्ट करना चाहते हैं। तो लेटर ऑन हमने अपनी जनरल नॉलेज की लेक्चर से स्टार्ट की थी, उस पर भी 9 से 10 लेक्चर्स जो हैं अब तक हो चुके हैं, और इसी को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अगेन, जिसमें आज का लेक्चर हमारा होगा हिस्ट्री के रिलेटेड। जनरल नॉलेज के हिस्ट्री से रिलेटेड जो MCQs हैं वो इसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एसेस भी हमने साथ साथ स्टार्ट किए हुए हैं, वो भी आपकी प्लेलिस्ट जो है ना चैनल में मौजूद है। वो भी एसेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेडली आपके लैट में आ सकते हैं। वो भी आपने सारे के सारे जो एसेस हैं वहाँ जाके वॉच करने हैं और उनको एज इट इज़ याद करने की कोशिश करनी है। तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर अबाउट MCQs रिलेटेड टू द हिस्ट्री। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स टुडेज MCQ सीरीज। अच्छा जी, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट MCQ है, कहते था तुगलक डायनास्टी वाज फाउंडेड इन इंडिया इन, कौन से सन में हुई थी? 1320। विच मुगल एम्परर ट्रांसफर्ड द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? शाहजहां। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार? तो इस ये जितने भी ऑप्शंस है ना, ऑल ऑफ दीज ये आप पढ़ लीजिएगा। कहता है एंथनी मैकडोनल वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। द पीपल ऑफ इंडिया agitated against the arrival of Simon Commission because, क्यों किया था उन्होंने? There was no Indian member in the Simon Commission, that's why उन्होंने किया। Which governor general decided to make English as the medium of instruction in India? Lord William Bentinck। कहता who was the first to raise the slogan इनकलाब जिंदाबाद? किसने ये नारा लगाया था फर्स्ट टाइम कि इनकलाब जो है वो जिंदाबाद है? मौलाना हसरत मोहानी ने। कहते हैं द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स द ग्रांटिंग इंडिया इंडिपेंडेंस चेंज्ड पार्शली ओइंग टू द, ये ऑल ऑफ द अबव MCQ आप पढ़ लीजिएगा, वो लेक्चर नंबर होता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ। The single biggest item of British capital investment in India was railways. Who among the following founded the Royal Asiatic Society of Bengal? Williams Jones. Who assassinated to Lord Lewis Mountbatten, the last Viceroy of United India? Thomas McMahon. After the War of Independence, the British government assumed control of India through Queen's Proclamation of 1858. Lord Curzon created province of NWFP in 1901. How many years Aurangzeb Alamgir ruled India? 49 years. How many years British dynasty ruled India? 19 years. How many years Iltutmish dynasty ruled India? For 25 years. How many years Suri dynasty ruled India? For 16 years. How many years slave dynasty ruled India? For 84 years. Bengal was divided into two parts. In which part the Muslims were in majority? Eastern Bengal. Lord Dash issued an order of dividing the province of the province of Bengal into two parts in July 1905. Lord Curzon. Then Henry Hindu started Swedish movement in 7 August 1905. The movement was started against British. Which Hindu leader started the movement against the partition of Bengal? Surendra Nath
Banerjee. Name the city which was the central point of agitation against the partition of Bengal. Hyderabad. Urdu Defense Association was founded in August 1900 in Dash City, Lucknow. The system of diarchy was in operation from 1921 to 1937. Under the 1973 constitution of the statesman who was sworn in as President of Pakistan, Fazl Ilahi. Under Treaty of Allahabad, Shah Alam to got the district if Kora and Allahabad and was also given annual pension of rupees 2.6 million in return of his favor, which areas were given to the British by Shah Alam. तो ये जितने जितने भी एरियाज मेंशन हैं ऑल ऑफ अबव जो है वाज गिवन. हु अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड? मैकडोनाल्ड. What was the important element in the strength of the revolt of 1857? So yes, 1857. Hindu Muslim unity. कहता बुलंद दरवाजा गेट ऑफ विक्ट्री was built by Akbar the Great to commemorate his conquest of Gujarat at Fatehpur Sikri. Under which scheme did Muslim League surrender the demand of separate electorate for the Muslims? Delhi Proposal 1927. Which political party was in power in northwest frontier provinces, now KPK, जिसको आप KPK बोलते हैं, at the time of independence? कांग्रेस जो है वो वहाँ पे पावर में थी. Who was the viceroy of India at the time of Quit India movement? लॉर्ड लिन. ये नाम देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा. When did Shimla Conference held? 1945. Who presented Lahore Resolution on 23rd of March 1940? A.K. Fazlul Haq. In March 1942, who came to Subcontinent with some proposals to solve constitutional problems? Stafford Cripps. Ibrahim Lodi was defended by Dash in the first battle of Panipat in 1526. Babur. Who supported Islamism in the subcontinent? Sir Syed Ahmad Khan. Boundary Commission was headed by Cyril Radcliffe. Nawab Abdul Latif founded the Muhammadan Literary Society in April 1863 at Calcutta. Who founded Muhammadan Literary Society in 1863? Nawab Abdul Latif. Act of 1935 consisted of how many sections? जो 1935 का एक्ट था उसमें कितने सेक्शंस थे? 321 sections. The deliberation of Act 1935 preparation was printed over how many pages? 326. Act of 1935 contained how many schedules? Schedules कितने थे उसमें? 10. Then है जी Act of 1935 contained how many parts? Parts कितने थे? 14. The first emperor of तुगलक डायनास्टी, इसका नाम था जी गायत अल-दीन तुगलक. Sir Sultan Muhammad Shah, the Aga Khan, headed the historic Shimla deputation which successfully presented Muslim demands on 1st of October 1906 before Lord Mentor. Delhi Proposal was published in which year? 1927. The first Urdu newspaper in Indian subcontinent was Jame Jahan Nama. When All India Muslim League celebrated Victory Day, January 1946. तो ये थे हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQs जो कि आपने हमारे साथ देखे. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लैट पे इसी तरह वीडियोस लेके आते रहेंगे. चैनल को आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है.
थैंक यू रियली वेरी मच।